Good evening, everyone. I'm audible to all of you. Yes, Voice is just you clear, are. right? Yes. Guys, today it has been decided that we will see what is IAM roles and S3. It has been decided by our cloud admins. Okay. Okay. So can anybody tell me what is meant by IAM roles? What is meant by IAM? Anyone is there? Guys, we are having almost 14 participants. So anybody can tell me that what is IAM? If you guys are responding, then it will be much more interactive session and we will be learning. Okay. Identity access. Yeah, sure it is identity and access management tool. Uh, What is the use of IAM? Can anybody tell me? Assigning the roles to users. Okay, there are roles, users, groups, and policies are there. yeah. So Yes. IAM roles enables you to control who can do and what he can do in your AWS account. Okay, what IAM roles giving you? IAM through IAM roles, we will enable that who can use the AWS resources. Okay, we can limit the AWS resources to some particular users. Okay, Yeah. so in IAM, there are users, groups, roles, and there are IAM policies, which we can call it as permissions. Okay, Mm, what is meant by IAM users? What is meant by IAM users? Can anybody tell me? First, we want to know the basic concept. What is IAM? What is user? Then what is mean by groups, roles, and what are the permissions or policies for that users groups. Okay, Yes. so user is a entity or a principal, we can call it a person. Okay, Yes. or a service that uses or interacts with our AWS resources. Okay, user consists a name, a unique set of credentials, then it is console password, same like the root user is having their own passwords for accessing the console. They are having the access keys, and there is multi-factor authentication for security, right? Mm. So each IAM user is associated with one and only one AWS account. Okay, each IAM user is associated with one and only one AWS account, which has been given by the root user. Okay, Oh, so root user is responsible for management of IAM users, right? yeah. So when we are giving access to users, either a new employee joined our organization or the existing person requires some permissions to access AWS resources. Okay, and some person requires to store the data in S3, which is a AWS service. Okay, Yeah. so what are the benefits of IAM users? Can anybody tell me what are the benefits of IAM users? See, there are a lot of benefits. First of all, it is having its own unique credentials. It is having their own individual permissions.
And in IAM user, we can revoke the accesses for particular services. Okay. In that, users, what they should take care of, they do not spread, they do not give the AWS root credentials or the user credentials to anyone. Okay. And if a person is using a root user, is logged in as root user, he can enable MFA, multi-factor authentication, for security purposes. Yes. And never share IAM users credentials to with anyone. Okay, never share your credentials. And when we create user, it is by default having no any permissions. So permissions specify who has access to AWS resources and what actions they can perform on those resources. Okay. We can assign permissions individually to each user. For example, if we create a user, then we can give access to EC2 service. We can give access to S3 for storage. Okay. So we can give access to a lot of services like RDS, then Amazon, DynamoDB, Lambda. There are more services which we can give access through policies. Okay. We can use IAM policies to assign permissions, right? We can use IAM policies to assign permissions. Okay. So the IAM policies has been written in JSON format. So we will go to, I'm going to share my screen now. We will start with creating a user, then creating a group. Then we will add that user in a group. Okay. We will assign the policies to a group. And after that, we will give access to that user as to S3 as a read access. Okay. So after that, we will see how the person that we created the user, some XYZ user, we can give access as read and write in S3, and we will go through S3 commands by uh, how to make the bucket and how to execute the commands in S3. Okay. So anybody is there who can perform the practical with me? Yes. Yes. Okay. Can you share your screen? Now, who has told that they are ready to perform practical with me? हाँ. Yes. कौन दूसरा कर रहा है क्या? नहीं. Can you please share your screen so that we will continue further? हाँ सर. एक्चुअली मेरा लैपटॉप अचानक सडनली स्विच ऑफ हो जाता है So anybody else तो is फिर there? हाँ, मैं लैपटॉप से ही हूँ लेकिन स्विच ऑफ हो जाता है कभी कभी. Okay. कल भी ऐसा ही हुआ. Okay. So I'm going to Anybody? share my screen. मैं Everybody कर दूं सर follow. शेयर? Yeah, मैं yeah, कर दूं? you can. Yes, yes. Are you sharing your screen? Yes, yes. 1 minute. Am I visible? Yes, yes, you can. Yes. You can proceed.
So first we will go to IAM service. It is actually available downside. You can go through that also. नेटवर्क थोड़ा स्लो है, इसके लिए टाइम लगा. Okay, so I will share my screen and you guys follow me, right? Okay, sir. Okay. So I'm sharing my screen now. As you guys see, this is IAM dashboard. Okay. Yes. So there are user groups, users, roles, policies. So first we will create a user group. Okay. We'll go to user group, and in that it is already one production group has been created previously. So I will create a new group. सर एक बार एक्सप्लेन करते हैं कि यूजर ग्रुप किसके लिए यूज करते हैं. यूजर ग्रुप कैसा है, एक्चुअली हमारे पास जो है डेवऑप्स का टीम है, ठीक है, एडमिन्स का टीम है, बहुत सारे टीम्स हैं हमारे पास, ठीक है. तो अपर मैनेजमेंट का टीम्स है, इनके सबके टीम्स के लिए, ठीक है, इनका ग्रुप जो हमको बनाना पड़ेगा, राइट. अभी एडमिन्स में समझ लो हमारे पास 3 to 4 एडमिन्स है, तो उनके लिए कुछ अलग ग्रुप रहेगा, उनके कुछ अलग परमिशंस रहेंगे, उनके कुछ अलग रोल्स रहेंगे, राइट. ये तो सबका काम एक जैसा तो है नहीं, तो सबका टीम तो है डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, राइट. सबका काम जो है डिफरेंट रहेगा, तो उसके लिए ग्रुप्स बनाना पड़ता है, राइट. हर एक मतलब सर ये ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स. ग्रुप लेवल के परमिशंस अलग रहेंगे, यूजर जी लेवल के परमिशन अलग रहेगी. जी जी. तो मैं आपको बताना चाहूंगा नॉर्मली कैसे होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाओगे वहां पे तो डिपार्टमेंट्स होते हैं, राइट. यू गाइस नो ना, ये there are experienced Yes. persons also in this group right now. So there are various departments, according to that we are making groups. So just now we will go through creating one group. Okay, so I am giving dev. It is a group name that I am giving here. Then what we will do, we have to just create a group. Okay, so user group I am going to create. I am not attaching any policy here right now. Create group. Okay, dev group has been created. Okay, ये no user has been defined, no permission has been given till. Okay, ये just a group has been created, then we are going for a user. Okay, in user group, suppose that dev group, whatever users are there, they are going to use EC2 service. Okay, so ये what I'm going to do, I'm going to dev group. Okay, here permissions are there. ये In that permissions we have to go like attach policies, add permissions and attach policies. Everyone is following my steps? Everyone is following or not? Please tell me. मैंने Yes, आपने yes, yes. यूजर क्रिएट किया. Yes, first of all we have created a group and we are assigning a policy. Suppose in that group there are 10 number of users and the 10 number of users are going to use only EC2 service. So for first of all we have created a user group and we are assigning a policy Amazon EC2 full access. Okay, we have assigned a policy, or we can create a policy also. If you know JSON very well, you can create policy also. Okay, so I have assigned a policy managed by AWS. You can see here it is managed by AWS, so we can't able to make changes in that, but we can create a policy by copying AWS managed policies and we can edit it as per our use. Okay,
if you know JSON, you can do it very well. Yes. Yes. So I have added that permission of EC2. Permission policy has been attached. So now I'm going for user. User, I'm going to add a user. Okay. User name we can give as what's the participant here? I can give Swapnil. Okay. Swapnil. Then what we are giving? We have to give credential type. We can give access key and access secret access key and ID, and we will give password for managing the AWS console. Okay. Then we will go to auto generated password. Then we will assign here required password reset must be in next sign in. Users automatically get that change password policy as per the policy. So we are going next permissions. So we are adding him in dev. Okay. We have created that group. So we are adding that. Then next, we can set the permission boundary here. Okay. We can control maximum permissions of the user. So there are the सर एक policies क्वेश्चन है managed by एक क्वेश्चन है AWS. मेरा Yes, please. हमने पहले क्या किया ग्रुप बनाया उसके Right. बाद में यूजर यूजर बनाया हमने हाँ, अपने यूजर नाम बनाया से हमने. ठीक है. तो परमिशन हमको ग्रुप लेवल पे सेट करना है या फिर यूजर्स लेवल पे सेट करना है देखो कंपनीज में कैसे रहता है, हमने एक ग्रुप बना दिया. ठीक है. वहां पे 10% जो है ऑलरेडी काम कर रहे हैं. एक बंदा जो है छोड़ के चला गया, तो हम क्या करेंगे, फिर से उसका यूजर बनाएंगे, फिर से उसको अलग से रोल्स देंगे, या फिर इजी वे हम अपनाएंगे कि हम ग्रुप्स को ऑलरेडी परमिशन देके रखेंगे. कोई भी नया बंदा आएगा तो हम उसको बस ऐड कर देंगे, तो उसका जो पॉलिसीज है, उसका जो परमिशन है, वो इनहेरिट कर लेगा. राइट. या फिर से हम अलग तो अलग यही यूजर काम लेवल पे टेबल. परमिशन देने की जरूरत नहीं है हाँ, यूजर लेवल पे परमिशंस उसको इनलाइन पॉलिसीज अटैच करना कहते हैं. ये बेस्ट प्रैक्टिसेस में नहीं आता है. यूजुअली क्या होता है ऑर्गेनाइजेशंस में, जो पॉलिसीज या परमिशंस हैं वो ग्रुप्स को अटैच किए जाते हैं. ओके. ओके तो इसके लिए सर हमने क्या किया, ग्रुप बनाया, उसको परमिशंस सेट किए, उसके बाद में हम उसमें यूजर ऐड कर रहे हैं. ओके. ओके तो हमने डेव जो ग्रुप है उसमें हमने एक यूजर ऑलरेडी परमिशंस हमने देखे रखे हैं, इसलिए हमने क्रिएट अ यूजर विदाउट परमिशन बाउंड्री किया. नेक्स्ट किया. उसके बाद में यहाँ पे की पेयर वैल्यू अगर कुछ डालना है तो डाल सकते हो, या ऑप्शनल है. नेक्स्ट कर दो. फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से अभी जो जनरेट होंगे क्रिएट यूजर करने के बाद में जो डिटेल्स आपको मिलेंगे वो आपको सेव करके रखना है. ठीक है. मैंने यूजर क्रिएट कर दिया. ठीक है. जो आपको एक्सेस की आईडी, फिर एक्सेस की और पासवर्ड, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है. ठीक है. मैं इस फाइल को यहाँ से डाउनलोड भी कर सकता हूँ CSV फॉर्मेट में, या फिर मैं डायरेक्टली यहाँ से ईमेल भी कर सकता हूँ. स्वप्निल का अगर मेरे पास ईमेल आईडी है, यानी कि अगर स्वप्निल नाम का कोई बंदा मेरे पास ज्वाइन होता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो मैं डायरेक्टली उसको ये एक्सेस की आईडी, एक्सेस की और पासवर्ड जो है डायरेक्टली मेल कर सकता हूँ. ठीक है. या फिर मैं ये फाइल यहाँ से डाउनलोड करके भी उसको अपना जो मेल का जो सॉफ्टवेयर यूज होता रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में, वहां से भी हम जो है उसको भेज सकते हैं. ओके. सो मैं इसको कॉपी करके रख रहा हूँ अभी. एक्सेस की आईडी, तो आपको इसको कॉपी करके रखना है. ठीक है. Yes. नेक्स्ट नेक्स्ट यूज के लिए आपको इसका यूज होगा, क्योंकि हमको IAM यूजर थ्रू इसको एक्सेस करना है. ओके. सर का नोटपैड पे कॉपी करके रखना है हमको हाँ, नोटपैड पे कर लो. अभी देखो यहाँ पे मैंने तो 2 ऑप्शन आपको बता दिया. एक तो उसको CSV में डाउनलोड करना है, या फिर हम ईमेल सेंड कर सकते हैं. राइट. तो अभी तो हमको फिलहाल डाउनलोड करना नहीं है, या फिर ईमेल भी सेंड करना नहीं है. तो हम नॉर्मली हमारा ही एक्चुअली क्या होता है, जब भी आप रूट यूजर से लॉगिन करते हो,
तो प्रॉब्लम क्या होता है, रूट अकाउंट यूज करना ऑलवेज डेंजर है। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो जो आगे जो प्रॉब्लम्स फेस होने वाली है, उससे बेहतर है आप जो भी सर्विसेज यूज करना चाहते हैं, आप एक यूजर बनाइए, अपना खुद का यूजर बनाइए, उसको एक्सेस दीजिए। एक्सेस देके आपका जो भी एक्सेस की आईडी है वगैरह, ये आप सेव कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए सीएसवी। ठीक है, उसके बाद में आप यूजर अकाउंट से ही लॉग इन किया कीजिए, आई एम मतलब यूजर थ्रू। आई एम रोल से ही लॉग इन जी करना है। जी। ओके। ठीक है, तो वो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा आई एम रूल्स का। और दूसरा ये बात है कि आपका रूट यूजर अकाउंट जो है, रूट अकाउंट जो है, उसमें कोई प्रॉब्लम भी आएगा नहीं। तो ठीक हमको है, अगर नई सर्विस ऐड करनी है तो फिर रूट में जाके सर्विस ऐड करके हाँ हाँ, फिर आई आप एम रोल से रूट लॉग यूजर इन से लॉग करना इन है। करके आई एम रूल्स हम्म। में जाके वहां से आप परमिशन सेट कर सकते हैं। ठीक ओके है, ओके ओके। ठीक है। तो अभी ये यूजर तो बन चुका है, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। अभी देखो यहाँ पे, ये सर सीएसवी फाइल मतलब सीएसवी फाइल मतलब नोटपैड फाइल है क्या? नहीं नहीं, एक्सेल फाइल है। इसके एक्सेल अंदर फाइल। आपका देखो ये लिंक आ गया है ऑलरेडी, इस लिंक से आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ओके। ये आपका आईडी है, 12 डिजिट्स आईडी आईडी है आपका। ठीक है, जो लॉगिन करते हैं ना हम लोग रूट या नहीं रूट दिख अकाउंट रहा है से। सर। ठीक है, एक तो एक इसको स्क्रीन नहीं दिख रही है सर। सॉरी हाँ, टैब मैं टैब शेयर करता हूँ। ठीक है, मैंने सीएसवी फाइल डाउनलोड किया है। हाँ अभी मैं क्या करूंगा, हाँ रूट यूजर से जो हम लॉगिन थे, अभी मैं जाऊंगा कहाँ पे, अपने यूजर लॉगिन पे। ठीक है, तो मैं यहाँ से अभी लॉग आउट कर रहा हूँ। उसके पहले हमने कौन सी परमिशन देके रखी है हमारे यूजर को, आप देख लो। न्यू विंडो से ही जाओ ना सर, ये भी रहेगा तो ऐड करने नहीं के नहीं, लिए न्यू इजी विंडोज में अगर होगा। हम जाएंगे, एडब्ल्यूएस में मैं अगर सेम लैपटॉप से सेम मशीन से अगर मैं लॉग इन करता हूँ, तो ये जो प्रीवियस लॉगिन है मेरा रूट यूजर का, वो लॉग आउट हो जाता है ऑटोमेटिकली। ओके ओके, ओके ओके। सो मैंने देखो यहाँ पे एक स्वप्निल नाम का यूजर बना दिया, देव देव उसका ग्रुप है। ठीक है, इसका पासवर्ड जनरेट हो चुका है, एक्टिव की भी है, इसका कितना टाइम है क्या है उसका डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इसके और सर रिसोर्सेज दिखाओ ना, क्या क्या परमिशन दिया इसको एक बार। देखो इसको परमिशंस क्या दिए है, हमने सिर्फ इसको डेव ग्रुप में रखा है। आपको अगर परमिशन चेक करने हैं इसके, आप डेव पे जाइए, ग्रुप पे, यहाँ पे आपको परमिशन दिख जाएंगे। स्वप्निल है, ठीक है, इसके परमिशंस यहाँ पे आप अगर जाओगे तो आपको दिख जाएगा हमने क्या इसको एक्सेस दिया है, ये Amazon EC2 फुल एक्सेस, बस इतना ही एक्सेस हमने दिया हुआ है। ठीक है, ओके समझ गए, ओके। सब लोग फॉलो कर रहे हैं इसको। अभी हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट कंसोल पे जाते हैं फिर से एक बार, और वहां से हम लॉगिन करेंगे। सॉरी, आई एम यूजर थ्रू हम जाएंगे, जो हमने आईडी पासवर्ड जो लिया था यूजर का, उससे हम लॉगिन करेंगे अभी। आई एम यूजर नेम स्वप्निल। ठीक है, और पासवर्ड जो हमने वहां से कॉपी किया था, वो पासवर्ड हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ओके, यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड मांगेगा, वो ओल्ड पासवर्ड हम डाल देंगे जो वहां पे हमने आई एम रूल के डैशबोर्ड से लिया था यूजर क्रिएट करने के बाद। और यहाँ पे न्यू पासवर्ड आपको जो भी सेट करना है आप सेट कर सकते हो। ओके, ये आई एम यूजर से हमने लॉग इन कर दिया है। अभी देखो मैंने इसको सिर्फ EC2 का एक्सेस दिया है, अगर मैं S3 पे जाता हूँ तो ये एक्सेस नहीं होगा। देखो मैं यहाँ पे अगर कुछ बकेट्स बनाने की कोशिश करता हूँ, क्रिएट बकेट का देख रहे हैं आप, यहाँ पे मैंने EC2 का इसको एक्सेस दिया है, तो यहाँ पे क्रिएट बकेट जो है ब्लर हो चुका है। मैं यहाँ से बकेट बना नहीं सकता, दूसरा कोई भी सर्विस यूज नहीं कर नहीं सकता। कर सकते। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया आई एम क्यों यूज होता है अभी? यस। यस यस। गाइस, एवरीबॉडी इज हाँ गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इससे तो लॉगिन हो चुका है।
हम वापस जाएंगे दोबारा। IAM रोल्स को तो हम समझ चुके हैं। EC2 अभी हम क्या EC2 एक करेंगे? बार एक्सेस EC2 एक हाँ, EC2 का एक्सेस आप चेक करना चाहते हैं ना? राइट राइट, वेट अ मिनट। मेरा एक क्वेश्चन मैं, है। हाँ बोलो ना। हाँ, जब हम दो यूजर क्रिएट करते हैं, हम्म। दोनों को भी EC2 का एक्सेस दे देते हैं, राइट तो अ, हाँ, एक यूजर EC2 में इंस्टेंस लॉन्च करता है, तब दूसरे को राइट। दिख जाता है क्या? एक यूजर EC2 का इंस्टेंस अगर फुल एक्सेस रहेगा तो दिखेगा। EC2 का फुल एक्सेस रहेगा तो देखेगा। दिखेगा, हाँ। हाँ, वैसा मैंने किया था, हम्म। फुल एक्सेस दिया और बाद हम्म। में इधर इंस्टेंस क्रिएट किए, उधर भी दिख रहे हैं हाँ दूसरी। हाँ, हमने उसको फुल एक्सेस दिया हुआ है ना, हाँ तो उसके लिए तो दिखेगा ही। हम एक हाँ ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, और अगर दोनों का एक्सेस है EC2 का, तो दोनों हाँ। का दोनों जो जितना इंस्टेंसेस रनिंग है उसका तो आपको पूरा का पूरा डिटेल्स मिलेगा ही। यस। राइट। सो अभी इंस्टेंसेस हमको लॉन्च करना है। लॉन्च इंस्टेंस पे जाएंगे, T2 माइक्रो ले सकते हैं। ओल्ड एक्सपीरियंस ही इसका बेस्ट है, तो हम ओल्ड एक्सपीरियंस में ही जाते हैं। 16.04 और 18.0। 18 18 पॉइंट पॉइंट है ना स्टेप में। 18.04। 04। राइट, ठीक है। हाँ। इसको हम लेते हैं। T2 माइक्रो है। अभी इसका सिक्योरिटी ग्रुप वगैरह आपको तो पता ही होगा, डायरेक्टली मैं लॉन्च कर रहा हूँ। ठीक है, हमको बस ये चेक यस। करना है कि इसको EC2 का एक्सेस मिला है या नहीं मिला है। ओके, यस। देखो इसको EC2 का एक्सेस मिला है, तब जाके इंस्टेंस जो है लॉन्च हो रहा है। ठीक है, और अभी देखो एक ऑलरेडी मैंने एक इंस्टेंस लॉन्च करके रखा हुआ है, दूसरा जो है पेंडिंग में है, जो हमने अभी लॉन्च किया है। ओके, तो यस। समझ गया सबको IAM रूल्स का यूज क्या है, IAM हम जो सर्विस है वो क्यों यूज यस करते हैं। तो इसी तरह यस से सर यस। देखिए, अभी जो है मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम S3 बकेट का भी एक्सेस इसको दे सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, अभी यहाँ से मैं लॉग आउट करता हूँ, वापस मेरे रूट अकाउंट में जाता हूँ। ठीक है, वहां पे जाके मैं ग्रुप को परमिशन देता हूँ AWS S3 फुल एक्सेस का। ओके, यस। तो अभी फिलहाल हम क्या करेंगे, यहाँ से लॉग आउट करता हूँ मैं, साइन आउट करता हूँ। हम वापस जा रहे हैं हमारे रूट अकाउंट में। सो हम वापस आ चुके हैं हमारे यूजर रूट लॉगिन पे। तो हम जाएंगे अभी IAM रूल्स पे वापस। वहां पे जाके हम क्या करेंगे, अभी जो हमारा यूजर ग्रुप है उसका एक्सेस जो है S3 फुल एक्सेस देते हैं। ठीक है, डेव ग्रुप हमने बनाया था, इसमें जाएंगे, इसका परमिशन सेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे S3, सॉरी, ऐड परमिशंस, अटैच पॉलिसीज, उसके बाद में S3 मैंने यहाँ पे टाइप किया, ये आ गया Amazon S3 फुल एक्सेस। ओके, ऐड परमिशंस, मैंने अभी ये परमिशंस किसको असाइन किए, ग्रुप को, यूजर को नहीं किए हैं। ठीक है, मैंने ग्रुप को कौन सा दिया है, EC2 फुल एक्सेस, S3 फुल एक्सेस। फुल एक्सेस। ठीक है, यस। अभी हम क्या करेंगे, एक इंस्टेंस लॉन्च करेंगे। सपोज
यहाँ पे इंस्टेंसेस है जो 2 लॉन्च हो चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अभी ऑलरेडी एक कनेक्टेड है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, अगर हम कोई ubuntu का ले रहे हैं तो उसमें अपडेट करना है, अपग्रेड करना है, ये तो आपको नॉर्मली सबको पता ही होगा, राइट? क्योंकि जो है यस हमको AWS CLI अभी इसके अंदर इंस्टॉल करना है ताकि हम S3 जो है एक्सेस कर सकें। तो इसके लिए क्या करेंगे, sudo apt अपडेट, sudo apt अपग्रेड, देन sudo apt install AWS CLI. AWS CLI. Okay, it is already installed. So अभी यहाँ से हम एक्सेस करेंगे AWS S3 ls, ये कमांड है कि इस जगह पे कितने जो है बकेट्स रहेंगे हमारे S3 में, उसका इंफॉर्मेशन हमको मिल जाएगा, लिस्ट आउट हो जाएगा। तो अभी हम जाएंगे S3 कंसोल पे। ठीक है, अभी IAM रूल्स तो हमने समझ लिया कि IAM रूल्स हम किस तरह से यूज कर रहे हैं। अभी हम जाते हैं S3 कंसोल पे। सॉरी, अभिजित व्हिडिओ चालू झाला. S3 buckets, किसी का वीडियो स्टार्ट हो गया, ऑफ कर दें। अभिजीत शिंदे. अभिजित शिंदे व्हिडिओ स्टार्ट. ठीक है, ये आ गए हम Amazon S3 पे। S3 क्या है, कोई बता सकता है मुझे? ऑब्जेक्ट सिंपल स्टोरेज सर्विस. स्टोरेज सर्विस, सिंपल स्टोरेज सर्विस. एक्चुअली मैं आप सबको बताना चाहूंगा, जो भी S3 जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं उसका लॉन्ग फॉर्म मत बताया कीजिए कभी भी। अगर इंटरव्यूअर आपको पूछता है कि S3 क्या है, तो आपको बताना आना चाहिए, इट इज एंटरप्राइज ग्रेड स्टोरेज सर्विस fully managed by AWS. AWS. What it is? It is enterprise grade storage Wait, fully sir. managed by We are AWS. noting that. Okay. Fully Sir, managed repeat. by AWS. Yeah. Sir, repeat please. S3 क्या है? सिंपल स्टोरेज सर्विस है। ये एंटरप्राइज ग्रेड स्टोरेज है, एंटरप्राइज ग्रेड स्टोरेज फुल्ली मैनेज्ड बाय Fully managed AWS। AWS. या क्योंकि इसका मैनेजमेंट कौन करता है? AWS करता है AWS. जी। अभी देखो, देयर आर लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ स्टोरेज सिस्टम। ओके, बहुत सारे स्टोरेज हैं यहाँ पे जो डेली यूज में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप सबको पता होना चाहिए कि हम S3 ही क्यों यूज कर रहे हैं, या फिर S3 यूज में ही क्यों आ रहे हैं, हम क्लाउड में किस लिए आ रहे हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माइग्रेटिंग टू क्लाउड। तो बता सकता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ माइग्रेटिंग टू क्लाउड स्टोरेज S3? इज एनीवन देयर? More secure and scalable. ओके, एंड what are Access the anywhere. benefits of S3? What are the Access benefits anywhere. of S3? HA, Access anywhere. okay, globally access है, then Pay as you go pricing. Right? see, S3 जो है वो ओरिजिनल सर्विस है, but we can access it globally. Okay, Yes. Yes. and cloud storage provides a web service where your data can be stored, okay, accessed and easily backed up by users over the internet. We can easily access over the internet. Okay, and we can't able to query whatever data we stored in S3, like our own machines, like our own laptops or computers. There we can run a query, we can compute, but in S3 we can't, because it is a
object storage. And in Azure and GCP, the same concept is there, but the name is little bit different. It is called blob storage, BLOB, blob storage. Okay. So there are multiple types of storages. Elastic file system is there, storage gateways are there, and from AWS we are having S3, then EBS, okay, elastic block storage, then Glacier is there, then Snowball, Snowmobile. There are a lot of different storage solutions available. Okay. Yes. Before S3, there are biggest challenges for finding, storing, and managing all the datas. Okay. And before S3, there are issues regarding running applications, delivering contents to customers, and hosting high traffic websites, and backing up email and other files. It requires a lot of storage. Okay, guys. So we need a solution which is simple, robust, with 11.9 durability, with HA, and the most important thing, we want cost reduction and zero maintenance, because it is managed by AWS. So it has been maintained by AWS only. Okay. Understood, guys? Yes, sir. Yes. Yes, sir. So S3 is a storage built for recovering any amount of information or data from anywhere over the internet. Okay. As I told you, everybody, it is having 11.9 durability, it is having high availability, then cost reduction is there, and we are getting 5 GB in free tier. Okay. If you store more than 5 GB, it will cost you. And we're having about 20,000 copy and paste options for any files we are storing or anything else. We're having only 20,000 copy and paste options. Okay. After that, it will get charged. So as we discussed benefits of S3, what is mean by bucket? Can anybody tell me what is mean by bucket? As this session has been completed. Yeah. S3 is a storage of multiple objects. What is meant by bucket? Bucket. We can store multiple objects in bucket. Yeah. We can store any kind of data in a bucket. Okay. So how does Amazon S3 works? So if we uploaded any data or any kind of object in our S3 bucket, S3 storage classes to be used for those specific objects. There are specific classes for S3. You can search here also. S3 storage classes. These are the storage classes which we use specifically as per our use cases. S3 standard, intelligent tiering, S3 standard IA, one zone, then S3 glaciers are there, and there are the features. Everything is given here. You guys can go through this document which is provided by AWS. Okay. So everything has been mentioned here, how much they are giving the data durability, how much they are giving HA, everything has been mentioned here. Okay. You can simply Google it. It will show what are the types of S3 data storage. Okay. So should we move to creating a bucket? We will simply create a bucket via GUI. We will just go to a bucket name. You guys follow me. Bucket name must be unique. It should not match with any other person's bucket name. So we will give
cloud space, we will give like that. Then this is the region, we will select the region same. Then if we are having an existing bucket and the permissions or whatever settings we have set, that also we can copy. But we previously were not having any bucket, so we, for the first time we are making this, so we will not choose that. And here are the ACL, access control list. So here are the bucket ownership mentioned. If we disable, it is recommended, okay, so that other person can also read and write all the operations. If we enable it, objects in the bucket can be owned by AWS account user, okay. The user who has the account, they can own the bucket ownership, okay. और And there यहाँ is पे a object writer. Yes. हेलो, Yes. जो हम IAM रोल क्रिएट कर रहे हैं, अगर इसको हम्म। इनेबल करेंगे तो वो एक्सेस कर पाएंगे वहां से। हाँ हाँ, एक्सेस कर पाएगा, ओके ठीक है। ओके सो S3 जो को डेटा जो है रीजन्स में सेव होता है, लेकिन हम इसको जो है ग्लोबली जो है एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और इसका क्रॉस रीजन रेप्लिकेशन भी होता है फॉर कंज्यूमर्स, ओके। सर वो बैच प्रोसेसिंग का क्या कॉन्सेप्ट है? बैच प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट आप EMR के इसमें बता रहे हो क्या, इलास्टिक में प्रोड्यूस में? नहीं सर, IAM से जो डेटा ट्रांसफर होता है ना, एक बकेट से दूसरे बकेट में, एक रीजन से दूसरे रीजन में, ओके, वही। एक रीजन से दूसरे रीजन में डेटा ट्रांसफर। हाँ, बकेट। एक्चुअली उसके बारे में, बैच प्रोसेसिंग के बारे में इंफॉर्मेशन मुझे है नहीं। ठीक है सर। ठीक, मैं आपको नेक्स्ट सेशन अगर होगा तो उसमें जरूर बताऊंगा। ओके सर, ओके। ठीक है। सो S3 बकेट हम क्रिएट कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो इसके लिए कंसोल पे गए, हमने क्रिएट बकेट किया, तो यूनिक नेम दिया, उसके बाद में रीजन सेलेक्ट किया। रीजन सेलेक्ट करने के बाद में हमने क्या किया, अगर एग्जिस्टिंग बकेट है हमारा और सेटिंग्स हमको अगर सेम ही रखनी है, तो हमको एग्जिस्टिंग सेटिंग कॉपी करनी है। तो उसके बाद में ऑब्जेक्ट ओनरशिप में हम ACL जो है डिसेबल करना है, रिकमेंडेड है। अगर इनेबल कर रहे हैं तो जो AWS यूजर है वही उसको एक्सेस कर पाएगा। तो एक्चुअली AWS रिकमेंड कर रहा है कि हमको इसको डिसेबल रखना है। यहाँ पे पब्लिक एक्सेस है। अगर जो डेटा हम S3 बकेट में सेव कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, अगर उसका एक्सेस इंटरनल यूज के लिए, यानी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में यूज करना है, तो हम उसको पब्लिक एक्सेस ब्लॉक कर देंगे, राइट। अगर उसका हम वर्ल्ड वाइड जो है एक्सेस दे रहे हैं, तो हमको इसको अनटिक करना पड़ेगा, ओके। यू गाइस आर गेटिंग माय पॉइंट? अगर हमारा इन्वायरमेंट है, ठीक है, इंटरनल एनवायरनमेंट में हम अगर यूज कर रहे हैं, तो उसका पब्लिक एक्सेस हमको डिनाई करना है, राइट। यस तो अभी जो है मैं इसका पब्लिक एक्सेस दे रहा हूं, ठीक है। इसके बाद में आता है बकेट वर्जनिंग। बकेट वर्जनिंग क्या होता है, इसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट हम स्टोर करते हैं, ठीक है, बकेट वर्जनिंग जो है, हम अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टोर करते हैं, उसके बाद में अगर हम उसमें राइट का ऑपरेशन करते हैं, तो जितनी बार हम राइट का ऑपरेशन करेंगे उतनी बार जो है उसका वर्जन जो है इंडेक्सिंग होता रहेगा वहां पे। सपोज मैंने कोई फाइल वहां पे स्टोर अपलोड कर दी, उसके बाद में मैंने सेम फाइल में कुछ चेंजेस कर दिए, फिर से अपलोड कर दी, तो उसमें जो है ओल्ड जो फाइल है मेरा वो चेंज होगा नहीं, ठीक है। और नया जो फाइल मैंने जो अपडेट किया रहेगा, जो ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, तो बकेट वर्जनिंग जो है अपडेट होती रहेगी इसी के साथ साथ, ठीक है। समझ गए आप लोग? और यहाँ पे देखो डेटा इंक्रिप्शन है। दो तरह से हम डेटा इंक्रिप्शन करते हैं, डेटा एट रेस्ट एंड डेटा इन मोशन, ठीक है। डेटा एट रेस्ट यानी कि स्टोर डेटा जो है, क्लाइंट का डेटा कोई है, जो रेस्ट है यानी कि ट्रांजिशन में नहीं है, जैसे कि अभी क्लिक स्ट्रीम का डेटा होता है, जैसे फेसबुक वगैरह जो भी एप्लीकेशन है, इस पे कंटिन्यूसली डेटा जो है मोशन में है। तो अगर इस तरह से नहीं है तो डेटा इन रेस्ट कहेंगे। अगर मोशन में है तो उसके लिए डेटा ट्रांजिट ऑन नेटवर्क, जो नेटवर्क से ट्रेवल कर रहा है, इसलिए हम उसको बोलेंगे डेटा इन मोशन, ओके। और इंक्रिप्शन का मीनिंग क्या है, डेटा कैन बी ओनली रीड और राइट बाय रेसिपिएंट, ओके, नो अदर पर्सन कैन मिसयूज इट।
इसको कहते हैं एनक्रिप्शन। ओके, तो उसके बाद में आता है एडवांस सेटिंग। अगर हम इसको इनेबल करते हैं तो इसको की से जैसे सिक्योर करते हैं, हमारा जो अभी कोई इंस्टेंस हम लॉन्च करते हैं तो उसके लिए .pem का की लगता है, राइट? यू गाइस ऑलरेडी नो इट। सो वो की से ही हम एक्सेस कर पाते हैं हमारे इंस्टेंस को। इसी तरह से हम Yes. इसको भी की प्रोवाइड कर सकते हैं। की मैनेजमेंट सर्विस नाम का एक सर्विस AWS की तरफ से ही होता है, की मैनेजमेंट सर्विसेज, KMS कहते हैं उसको। ठीक है, आगे आपको इसके बारे में पूरा डिटेल में आएगा, एनक्रिप्शन क्या है, ऑथराइजेशन, एनक्रिप्शन, इसके बारे में पूरी तरह से आपको जानकारी दी जाएगी। मे बी आनंद सर विल टेक योर सेशन फर्दर। ओके, so after that we will go to advanced settings. Here is object lock. Object lock होता क्या है एक्चुअली? वंस ऑब्जेक्ट लॉक इनेबल हो जाता है तो आप राइट वंस एंड रीड मेनी, आपने HDFS का प्रॉपर्टीज पढ़ा है, उसका प्रॉपर्टी क्या है? वर्म प्रॉपर्टी आपने सुना रहेगा, WORM, राइट वंस एंड रीड मेनी। ओके, यू गाइस आर गेटिंग? Yes, yes. सो ऑब्जेक्ट लॉक ऑन करने के बाद we can do one write once and read many times, and if you enable the object lock, it will automatically enable bucket versioning. Okay, so once it is enabled, you can't disable the object lock for the specific bucket. Okay, see here it is written, enabling object lock will permanently allow objects in this bucket to be locked. Understood? So for the time being we are disabling it and we are going to create a bucket. So bucket name is already has been taken by someone, so we will take another name. We will say cloud pause. We will create a bucket. Now see, the bucket has been created and it is in this region and access has been given to public, means it is all traffic like that. We will give in a security group. Okay, so to access this bucket, first we will upload a file from here GUI. We can upload a file, any file we can upload, add files, any file we can upload. So I am uploading a file. Open. From here you can give the destination details, and these are the permissions we can set for this file, and these are the properties which we will give. The storage classes are there. What type of storage? If you are, there are two types of storage. One is the data has been if you set the data life cycle, na? Suppose after 1 year your data will be going to move to glacier, means for 1 year it will be hot data, after that it will be warm data, after that it will be cold cold storage, right? Yes. These are the terms we're using usually. So suppose you can set after how many days the data which move to which storage class. So we will use standard frequently accessed data for time being. There are a lot of things you can use. See here, the minimum storage duration has been given, 30 days, 90 days. Okay, you guys store the file as per that. For 90 days, if you select this, the file will be stored for 30 days. After that it will move to the selected storage class. Okay, it will be available in S3 bucket for 30 days. If you select this, after that it will move to per GB. There is Amazon sorry, AWS calculator is there also. You can calculate the charges for each resources we are using for AWS. Okay, you guys note it down. AWS calculator is there. From there you can calculate price for any service that we are going to use. Okay,
So here I am selecting standard one. After that, I'm not specifying any encryption for time being. After that, additional checksum, it is just verification new object. Then tags are there. We are not giving any tag just now. And metadata is an optional thing. Metadata means data of data. It is like in tabular form where the data has been stored in which column, in which row. For example, I'm telling you like this. Suppose in some Excel sheet there is a data stored on so and so row and so column. So that specific block row and column number should be like metadata, that this data has been stored on this row and this the column. Okay, so I have uploaded the file by using GUI. Okay, new credentials. So I can use those actions from here by selecting this file. I can modify all the details. I can copy the URI. I can download it. I can open it. I can delete it. And from actions, we can download, we can share, and we can copy, move, all those other things here. We can edit the metadata. We can edit the storage classes. Just now I have shown you the storage classes for S3, and we can encrypt it also. Okay, we can create a folder in the bucket also. If you want to create a folder, we can create a folder and keep that file, keep that object in that folder also. Same like in our system, we are creating a folder, we are saving files in it. Okay, you guys are getting? Yes, sir. Please respond. These are the properties of the bucket. Yes, sir. Here bucket versioning is there. Okay, here intelligent tiering archive configurations are there. We can create a configuration here. And regarding cloud trial, I'm not having very much knowledge. So further, you can uh, read and perform further. These are the object log. If you want, you can put it object log, but once it is enabled, you can't disable it, as I have shown you earlier. Okay, so these are the properties for the file we are uploaded, and these are the permissions. We have given permissions for that specific bucket. Okay, you can edit here. We can write the bucket policy. No policy has been given here till. Then bucket ownership, as we can change the access control from here. Read, write, we can give access to specific user. Okay, now it is given to everyone, it is public access given. Then there is cross region sharing. We can share the stored data in another region users also. If suppose our user is in another time zone, we can share with him also. Okay, and these are the metrics. These are the metrics collection. If we store any data, how much the total bucket size, how much the total number of objects stored in that bucket, we will get the all the details of the bucket. Okay, and in management, as you guys see, there is life cycle we can create. If we go to create a life cycle, there are, we can enter a rule name, anything you want. Okay, after that we can give after how many days the data that object will go to which S3 storage class. Okay, this is the data life cycle. Life cycle means what? From origin to last step. We can say as from birth to death, from hot data to cold data. We can store it in glaciers. Okay, so we can create a data life cycle from here. Understood? Yes, sir. If any problems are there, you can guys tell me. Huh? So we have gone through all those things now, and this is the access point of S3. We can create access point from here. Actually, it is given here also. Okay, buckets. In that bucket, you can access by copying the ARN.
and for this specific object you can also download it. Okay, if you share that ARM, from there they will download. See, this is the, you after you selecting this, you can copy the URL and share to someone. If they want to download it, they will download. Most of the time, guys, we are downloading the repos if we are not having. Okay, for CDH, CDP, all the repos we are storing in S3, and as per use we are using. And if anyone required, we are sharing this via S3 bucket only. We are giving the access and they are downloading it. Okay, you guys understood? Okay, sir. Now Yes, we sir. will move to CLI. In CLI, now see AWS S3 LS. See here one cloud cause bucket has been shown. You guys are seeing this. First of all, what is the previous method? We have installed AWS CLI, sudo apt update, sudo apt install AWS CLI. After that, what we are doing? We are doing AWS configure, right? We are doing AWS configure. Here, the access key ID, if we are going through user, that CSV file we have downloaded, right? In IAM user, when we created, we have Yes. downloaded the CSV file. In that access key ID, then access key, then region name where we want to deploy the bucket, it is coming. So to avoid this traditional system, if anyone sees your access key ID or a secret access key, if they got someone, they can misuse. So that's why we have gone through making a user and assigning him to a group, and group has been attached with a specific permission, so that the users will inherit all the permissions, all the policies which has been attached to group. Okay. सर यहाँ पे हमने अगर IAM रोल क्रिएट किया है तो उसको एक्सेस की और आईडी को जो मैंने हमने तो, डाउनलोड किया हाँ, उस वो पे डाउनलोड देना किया था, वो पड़ेगा। हमको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो इसके थ्रू आप जो है AWS CLI एक्सेस कर सकते हैं। ओके, ठीक है, लेकिन इसमें इशू क्या है, अगर आप एक्सेस की आईडी और एक्सेस की जो है आप डाउनलोड करते हो तो उसका मिसयूज हो सकता है। आपका सपोज आपका लैपटॉप कोई और यूज कर सकता है, या फिर मैंने आपको ईमेल थ्रू CSV फाइल भेजा, वो फाइल किसी और ने ओपन कर ली, किसी और ने आपका एक्सेस की आईडी अगर ले लिया, तो कुछ भी कर सकता है, राइट? देयर इज पोटेंशियल थ्रेट. So to avoid this, what we are using IAM. पॉलिसी तो सेट किया होता है ना हमने सर, जो पॉलिसी में उतना ही एक्सेस करेगा वो। हाँ, पॉलिसी तो उतना ही एक्सेस करेगा, लेकिन ट्रेडिशनल सिस्टम क्या था, हमने यूजर ग्रुप बनाया, उसको पॉलिसी अटैच किया। प्रीवियसली क्या होता था, हमने जस्ट यूजर बनाया, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस जो यूज होती हैं वो बताया मैंने। प्रीवियसली क्या होता था, हमने यूजर बनाया, यूजर बनाने के बाद उसका एक्सेस की आईडी दोनों उसको शेयर कर दिया, और वो वहां से AWS CLI जो है एक्सेस कर रहा है, राइट? समझ गए? यस। अभी हमने क्या किया, विदाउट यूजिंग एक्सेस की ID and without using secret access key, we are directly accessing S3 buckets. Okay, डायरेक्टली हम स्टोरेज एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ पे हमको पासवर्ड और आईडी वगैरह कुछ भी डालने की जरूरत पड़ी नहीं है हमको, क्योंकि हमने ऑलरेडी वो रोल जो है, जो पॉलिसीज जो है असाइन कर दिए हैं वहां पे, राइट? जो हमने एक ग्रुप बना, यूजर बनाया था स्वप्निल, उसको डेव के ग्रुप में रखा था, और ग्रुप को हमने परमिशन दिया था कि इस तरीके एक्सेस जो है कर सकता है, फुल एक्सेस इसको है। समझ गए? यस सर। प्रीवियसली क्या होता था, यूजर बना दिया, उसको आईडी वगैरह दे दिया, उसको जो है वो आईडी थ्रू एक्सेस कर सकता था, लेकिन वो हार्मफुल है, उसका मिसयूज हो सकता है। इसके लिए हमने पासवर्ड लेस बोलेंगे इसको, हम पासवर्ड लेस लॉगिन जो है इसी को कहते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं सब लोग? अबंतु का यूजर जरूरी है या पावर शेल से भी कर सकते हैं? मैंने तो अभी पावर शेल से किया है। ओके, ठीक है, पट्टी में समझ रहे गाइस? पट्टी में कर सकते हैं। हाँ, पट्टी में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। प्रोडक्शन ग्रेड में क्या चलता है इससे ज्यादा? देखो यूजर आप डिपेंड करता है, प्रोडक्शन ग्रेड में ज्यादातर तो अभी पट्टी इस्तेमाल में आता है। ठीक है,
लेकिन अगर आपको वहां पे अगर दिया गया, जैसे कि आपको अगर आईपैड वगैरह दिया जा रहा है या फिर आपको सारी सर्विसेज अवेलेबल है, तो वहां तो फिर डायरेक्टली आपको टर्मिनल मिल जाता है। ठीक है, वहां पे तो पट्टी वगैरह का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती आपको, राइट। सर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि S3 बकेट के लिए इंस्टेंस हम्म। जरूरी है या अपना CL इससे भी कर सकते हैं पावर शेल से, या इंस्टेंस जरूरी है? ये इंस्टेंस ubuntu जरूरी नहीं है, IDE। इसके लिए इंस्टेंस जरूरी नहीं है। इसके लिए हाँ यही आपको क्या पूछ रहा करना हूँ। पड़ेगा, AWS CLI का एक .exe फाइल है, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, Okay, .exe फाइल डाउनलोड करके फिर वहाँ पे आपको जो एक्सेस की आईडी जो है ये आपको रखना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, नेटवर्क थ्रू आप उसको लॉग इन कर सकते हैं। S3 को ही एक्सेस कर पाएंगे आप, बाकी और ओके, कोई चीज एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ओके। तो वो तो डिपेंड उनके लोकल नेटवर्क के ऊपर हाँ हाँ चलेगा ना। हाँ हाँ, ओनली S3 लेटन एक्सेस से कर भी सकते हैं। मिल सकती है। बराबर। ओके ओके। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, S3 के जो भी कमांड्स हैं उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। S3 के कमांड्स आपने सभी ने प्रैक्टिस किया है? बेसिक बेसिक किया सर, मेक बकेट रिमूव हाँ, वगैरह। बेसिक बेसिक ही लगते हैं, जैसे कि मेक बकेट, रिमूव बकेट, फिर उसके बाद में लास्ट अपलोड टाइम फाइल। आपने सिंक दिखाया था, सिंक वाला दिखाया हाँ, था। सिंक वाला मैंने दिखाया था आपको। ओ, बेसिक बेसिक ही हमको यूज करना है, ज्यादा हार्ड में जाना नहीं है। 7-8 कमांड ये है जो हमको रेगुलर यूज में आते हैं। ठीक है। ये सिंक कमांड से सर, हम जैसे कि कोई बता रहा था S3 बैच के बारे में, हम्म। तो दूसरे रीजन में अगर डाटा ट्रांसफर करना है बकेट का, हाँ, तो अगर सिंक से परमिशन कुछ दिए है है तो हम कमांड कर इसमें? सकते हैं। अगर ओके। परमिशन उसने दे रखी है तो हम कर सकते हैं ना। अगर उसने उसका बकेट का वहाँ पे अगर परमिशन आपको दिया है तो आप कर सकते हो वहाँ पे। कॉपी पेस्ट भी, जैसे कि मतलब कॉपी है एक टाइप का वो, हमको बस डेटा ट्रांसफर करना है नेटवर्क पे। अभी हम जैसे नॉर्मली हमारे ओन मशीन पे हम कॉपी पेस्ट करते हैं, उसी तरह से बस क्या है, ये नेटवर्क पे ट्रैवल करेगा। बराबर। सर एक बार वो जो ऑब्जेक्ट है वो डाउनलोड हम्म। करना है हमको डेस्कटॉप पे, हमारे लोकल मशीन पे, तो उसका डाउनलोड कमांड करना बता है दो। क्या? देखो यहाँ से डाउनलोड कर लो आप, यहाँ पे है ना नहीं नहीं, डाउनलोड, कमांड लाइन से है, कमांड लाइन से। कमांड लाइन से। यस। आपको क्या करना है, CLI से आपको आपका सिस्टम में लेना है। यस। अभी आपके बकेट में शायद एक फाइल है, हम्म। तो वो डाउनलोड करना है आपके लोकल मशीन पे, लोकल CLI से, मशीन पे CLI से। CLI से। हाँ CLI। यस। सॉरी, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है अभी फिलहाल। अच्छा तो हमने ओके। तो कभी भी SCP ट्राई वगैरह नहीं कुछ किया है इसे। काम करे? क्या बोले? SCP वगैरह काम करेगा कुछ यहाँ पे? SCP काम करेगा यहाँ पे, SCP और फाइल नेम पाथ, हाँ, उसका एक तो पता है क्या? कमांड है उसका, कि आप CLI से डायरेक्टली आप अपने लोकल सिस्टम पे उसको ले सकते हो। यस। आपका नाम क्या है? महबूब। महबूब। यस। मैं मेरे को पर्सनली पिंग करना, मैं आपको उसका एक कमांड है मैं शेयर कर देता हूँ। मैं यूज अभी फिलहाल यूज में नहीं है वो, इसलिए थोड़ा सा जैसे हम वो PSCP जो यूज करते हैं ना इसके लिए, यस। पावर शेल से कनेक्ट करने के लिए, उस टाइप में थोड़ा लेंदी कमांड है वो। उसे हम ओके। डायरेक्टली CLI थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं हमारे लोकल सिस्टम पे। ठीक है। ओके सर। ओके। सो अभी देखो हमने क्या किया, यूजर बनाया, ग्रुप बनाया, परमिशन सेट की, उसके बाद में हमने EC2 इंस्टेंस का उसको एक्सेस दिया, फिर S3 बकेट का एक्सेस दिया, फिर उसके बाद में हमने GUI थ्रू बकेट बनाया, उसके बाद में हमने एक फाइल अपलोड की उसके अंदर। ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, S3 के जो कमांड्स हैं उस कमांड को हम एग्जीक्यूट करेंगे। अभी देखो यहाँ पे AWS S3 LS हमने किया, तो हमको यहाँ पे एक बकेट मिला। अब हम दूसरा बकेट बनाएंगे फिर से, AWS S3 मेक बकेट S3 कोलन, देन बकेट का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, CLOUD क्लाउड केस कर देंगे। सर देखते हैं इसमें बकेट गेट बनेगा। कमांड भी है शायद, गेट। गेट वो थोड़ी गेट। शॉर्ट कमांड है, इससे इजी है सर। हाँ गेट। अभी देखो यहाँ पे सेम कमांड हम यूज करते हैं। यहाँ पे दो बकेट अभी क्रिएट हो गई है, एक क्लाउड केस और एक क्लाउड कॉस, जो हमने अभी जस्ट नाउ क्लाउड केस क्रिएट की थी। ओके। और एक चीज है, अगर किसी बकेट में आपके ऑब्जेक्ट स्टोर होते हैं, अगर आप उसको डायरेक्टली रिमूव कर रहे हैं CLI थ्रू, तो वो रिमूव होगा नहीं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसको एम्प्टी करना पड़ेगा, उसके बाद में ही जो है
वो बकेट रिमूव होगा, या फिर आप फोर्सफुली भी रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अगर अगर आपको रिमूव करना है इस बकेट को, AWS S3 RB रिमूव बकेट S3 कॉलन क्लाउड केस। अगर देखो मैं यहाँ पे क्लाउड कॉज करता हूँ तो ये रिमूव होगा नहीं। क्या बोल रहा है? द बकेट डज नॉट एग्जिस्ट, सॉरी क्लाउड्स कॉज है, हाँ स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया, क्लाउड्स कॉज। देखो अभी अगर बकेट में अगर डेटा है तो बकेट नॉट एम्प्टी का वो एरर बताएगा, बकेट एम्प्टी नहीं है, इसकी वजह से बकेट जो है डिलीट नहीं हो रहा है। अगर मैं इसको क्लाउड केस करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली जो है रिमूव हो जाएगा, क्योंकि उस बकेट में कुछ भी डेटा स्टोर हमने नहीं किया था। ठीक है, आप फोर्सफुली बता रहे थे ना सर, हाँ फोर्सफुली फोर्सफुली वाला मैं था। अभी बताता हूँ। ठीक है, फोर्सफुली का भी एक ऑप्शन है, हम फोर्सफुली भी जो है उसको बकेट रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और देखो सिंपल सिंपल है, आप अगर इसका डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे AWS CLI के, तो वहां पे भी आपको जो है इसके बारे में पूरा डिटेल मिलेगा। ठीक है, जो भी कमांड्स आप यूज करना चाहते हैं वहाँ पे बहुत सारे कमांड्स आपको दिए गए हैं, लेकिन हमको जो है इजी इजी जो कमांड्स हैं उतने ही हमारे रेगुलर यूज में आने वाले हैं। ठीक है, तो फोर्स वाला कमांड आपको बताना था ना, राइट? तो AWS S3 रिमूव बकेट S3 क्लाउड कॉज। हाँ आप सब लोग ट्राई कर रहे हो ना ये हाँ हाँ सर। फोर्स? देखो बकेट नॉट एम्प्टी का ही आ रहा है फिर से, वेट अ मिनट। बकेट जल्दी एम्प्टी करो। नहीं है इसलिए वो बता रहा है फोर्सफुली नहीं ले रहा है। हाँ तो हम उसको AWS S3 LS S3 कॉलन, उसको जो है एम्प्टी भी कर सकते हैं ना हम लोग। तो उसको हम एम्प्टी कर देते हैं, बकेट में अभी जो भी डेटा रहेगा। LS डाला ना सर आपने? हाँ सॉरी, इसको RM करते हैं, RM करेंगे रिमूव। ओके, इसमें कौन सा रहेगा, फाइल नेम क्या है, फाइल हमने कौन सी अपलोड की थी इसमें, हेलो न्यू यूजर क्रेडेंशियल्स। हेलो। हाँ बोलो ना। हाँ सर जल्दी करो, 3 मिनट सिर्फ बता रहे हैं। अच्छा 3 मिनट में एंड कर देंगे बोल रहे। अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ ये देखो मैंने जो है न्यू यूजर क्रेडेंशियल की फाइल जो है डिलीट हो चुकी है। ठीक है, जो हमने GUI से अपलोड की थी। इसी तरह से आप यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हैं, किसी फाइल को अगर अपलोड कर रहे हैं तो आप अपलोड भी कर सकते हो, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। मेरे पास स्क्रिप्ट है इसका, अगर मैं स्क्रिप्ट शेयर कर देता हूँ आप लोगों को, अगर इसमें कुछ दिक्कत आती है तो नेक्स्ट टाइम हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। यस सर। अ, अभी हम जो है रिमूव बकेट करेंगे क्लाउड कॉज का, तो ये बकेट जो है रिमूव हो जाएगा। बकेट नॉट एम्प्टी बता रहा है अभी भी, विल चेक बकेट्स क्लाउड कॉज यूजर क्रेडेंशियल डॉट CSV। यहाँ तो डिलीट हो गया है ऑलरेडी, फिर भी वहाँ पे बता रहा है, तो एक बार इसको हम LS करके देखते हैं। S3 देखो अभी वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे अभी देखो CLI पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे दिखा नहीं रहा है अभी।
देखो ये डिलीट हो चुकी है ऑब्जेक्ट, हमने जो अभी वहां से रिमूव किया था, ठीक है। तो अभी मैं इसको जो है बकेट जो है रिमूव कर देता हूँ। यू मस्ट डिलीट ऑल वर्जन्स इन द बकेट। बकेट वर्जनिंग हमने शायद ऑन करके रखा था, इसकी वजह से वो डिलीट हो नहीं रहा है। ओके, सो वी हैव डिलीटेड दिस फाइल which we have uploaded. Okay, if guys you are having any questions you can tell me, otherwise we will wrap up. आप सबको समझ में आया ना, हमने यूजर कैसे बनाया, ग्रुप कैसे बनाया, पॉलिसी कैसे अटैच की? यस सर, यस। अगर किसी को IAM रोल्स में कुछ दिक्कत है तो मुझे बता सकता है। सर CLI से बकेट वर्जनिंग भी डिलीट कर सकते हैं ना? हाँ, बकेट वर्जनिंग भी हम डिलीट कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ा कमांड मुझे देखना पड़ेगा अभी। एक्चुअली वी हैव नॉट इनेबल्ड बकेट वर्जनिंग प्रीवियसली व्हेन वी हैव प्रैक्टिस्ड. So there is you can just simply google it, AWS CLI commands, it will show it to you. Okay, you can practice the commands, but basically we are having only that remove bucket, make bucket, copy and paste. These are the commands we are using: copy, remove bucket, add bucket, and that versioning we are not enabling for practice purpose. Okay, ओके सर, थैंक यू। so सर वो anybody कल having का, any questions? जी बोलिए। सर वो कमांड का फाइल शेयर कीजिए ना, कल जो शेयर किया था आपने, मैं ओके डाउनलोड ओके ही नहीं किया था। ओके, मैं शेयर कर देता हूँ अभी आपको, ठीक। Okay. Guys, you're done? Yes sir, we have done. All right. So, is there any sharing wearing? Some S3 script is going to share. Okay, try to make it. So Make it. Share it. yes, All sir, right. sir, I'm sharing. You guys have a lecture. You guys have a session on Saturday, Sunday as well, right? Yes. Yes. I guess it's at 3:45, maybe. I don't remember. 2:45. 2:45. 2:45. 2:45. All right. हाँ। All right. सर वो मैसेज आया है हमें, कौन सा? Sorry. वो मैसेज आया है हमें, कौन सा किस चीज का अटेंड कर? सर की तरफ से आया मैसेज हमें। Which message you're talking about? एक मिनट, तो दूसरा सेशन है कोई उसका। AWS की तरफ से कंडक्ट हुआ है कोई सेशन, उसके लिए किया है। That will be a broadcast message to everyone, or maybe Saturday. एक मिनट, नहीं वो नहीं। सर्विस हाँ, this invitation is received strictly for cloud candidates only. कब है? AWS solution architect will be delivered on production application deployment in AWS data center from scratch. ऐसा है। It's on Saturday, right? हाँ, ये on Saturday. Okay. You guys are from 19th. I hope so. 21st में और 19th से। आप लोग का बैच कौन सा है? आपका आवाज 21st में। Okay, हाँ, that will be a हाँ। guest session. Okay. तो guest sessions mostly आपके अलग-अलग candidates रहते हैं, अलग-अलग रहते हैं. Alright. Anyway, any questions so far related to course or something like that? Anything you have any questions? सर एक क्वेश्चन है। हेलो, हाँ जी बोलो. EFS हमारा लास्ट वीक हो गया सेशन EFS का, तो वॉलंटियर बता रहे कि उनको तो वो EFS लेने के लिए बता रहे, तो वो मना कर रहे हैं, मतलब नहीं अभी तक उनको बताया नहीं लेने के लिए। ऑलमोस्ट एक वीक 1 वीक हो गया उसको। EFS क्या? EFS का टॉपिक हो गया हमारा लास्ट वीक, तो अभी 1 वीक क्रॉस हो गया उसको, तो उसका अभी तक प्रैक्टिस थोड़ा सा इश्यू आ रहा है। अगर वॉलंटियर लेंगे तो क्लियरेंस आएगा थोड़ा। All right. And about this also, I had requested today also for this batch operations. So he said that he has no idea. So there is an issue in batch operation.
Yes, S3 batch operation also. S3 batch operations now. Okay, all right, fine. We'll figure it out that also, because mostly Yeah. कुछ batches में ना पढ़ाया नहीं है batch operations. So that's the reason. Because S3 मतलब थोड़ा ही पढ़ाया है, इतना deep में नहीं गया है, but maybe कुछ batches में बताया रहेगा. So I'll connect with the volunteers about it. Don't worry about it. All right. Yeah, Yes, yeah. Thank you so thank, much. All right. thank you. All right. Okay, okay. Bye bye. Take care. All the best. Yes, yes. Thanks. तो Hello. Yes, Rohit. हाँ सर, ये डिसाइड कैसे होता है? क्योंकि कुछ रूम्स में जाओ ना तो अलग स्टडी होता है, और कभी हम डिस्कनेक्ट होते हैं तो नेक्स्ट रूम में थोड़ा अलग चलता है। Sorry, तो sorry. कई बार आपकी ऐसा, आवाज नहीं आ रही है. हेलो, आ रही है सर आवाज? हाँ जी. हाँ सर, कभी कभार आपकी हमारा आवाज कम आ रही है. हाँ, हमारा रूम कभी डिस्कनेक्ट होता है ना, तो सर दोनों रूम्स में डिफरेंट डिफरेंट चलता है स्टडी, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। हाँ, अच्छा, ठीक है. वो हो हाँ, जाता है, मतलब टॉपिक एक ही रहता है. S3 है और आई एम रोल सिखाता है. कोई कोई S3 पे जाता है, कोई कोई आई एम रोल पे जाता है. सो दैट्स द ओनली डिफरेंस आई गेस. टॉपिक्स आर शायद। द सेम बट सर हाँ, हाँ सर, सबको एक टॉपिक सेम रहता है क्या? ये टॉपिक्स आर सेम बट अभी डिपेंड करता है. मे बी एक लेगा S3 के बारे में और दूसरा लेगा आई एम रोल के बारे में, तो ऐसा वो डिफरेंस होता है. तो दो टॉपिक्स रहेंगे तो अलग अलग करेगा. ओके राइट. एनीवे, चलो, I'll see you guys. मेरे को अजान हो रही है तो आई थिंक वी शुड गो ऑल राइट. चलो, बाय बाय. टेक केयर. ऑल द बेस्ट. Okay. Okay, sir. थैंक यू.